So, hello, welcome everyone. So, in this video, we are going to learn how to build our own coding language. Okay, so these are some steps that this is how we are going to build our coding language. So, what first thing we should know that in this video, I'm going to cover that how to read a file and how to convert our code into tokens. So, what are the tokens? How to read file? We will ये आगे जाके हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक कोड है। देखो ये मैंने कोड लिखा है। इस कोड को मुझे रीड करना होगा। अगर मैं कोड को रीड ही नहीं कर पाऊँगा तो उस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, राइट? सो हाउ वी आर गोइंग टू रीड अ फाइल इन जावा? फॉर दैट आई शुड have this path where file path, and using this path dot get url I'll just pass the फाइल नेम। ओके, ये अभी इसी फाइल में इसी फोल्डर में, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कोड डॉट डॉट सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, मुझे ये जो भी मैंने फाइल रीड की है उसको मुझे एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर करना है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूँगा स्ट्रिंग str इक्वल्स टू वेर जो भी मैंने फाइल रीड की है, रीड ऑल बाइट्स फाइल पाथ, उसे मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करना है, राइट? तो इसके लिए क्या करूँगा न्यू स्ट्रिंग और इसमें स्टोर कर लूँगा। नाउ जो भी मेरे फाइल में लिखा है वो सब इसी स्ट्रिंग इस वेरिएबल स्टोर होगा। देखते हैं सही में काम कर रहा है नहीं। ठीक है, तो आई जस्ट रन दिस कोड मेन डॉट जावा। यस, सो ये जो कोड लिखा है वो सब यहाँ पे दिख गया। नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी वी जस्ट कंप्लीटेड आवर first step. Our first step was to read, our first step is to read the, okay, to read the code file. Okay, we completed that step. Now we have to create a tokenizer. So tokens, what is token? Okay, what is token? So if I have, let's say if I have this code, int a equals to 12. Now I know this is an integer, this is a variable name, this is equals to, and this is 12. But a computer don't know that what is the meaning of these things, right? So to tell the computer that what is the meaning of each and every element inside our code, so we should create it for the token. Okay, so how to create token? So for that, what I'll do, I'll create one package. Package name will be my token. Okay, inside that what I'll do, I'll create tokenizer. What is it? Use the tokenizer, that this is the main of code that will convert our code into token form. Okay, tokenizer.java. Okay, now so अभी हमारे पास एक टोकनाइजर है, लेकिन इस टोकनाइजर के पास क्या होना चाहिए? कोड होना चाहिए। अगर इसके पास कोड ही नहीं होगा तो इस जो हमारे कोड है उसको टोकन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग कोड नाम का एक वेरिएबल लूँगा, इसमें हमारा कोड स्टोर होगा। अब जो भी हमारा पब्लिक क्लास है उसमें मैं क्या करूँगा, इस एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा टोकनाइजर का, और उसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना, पास करना पड़ेगा, यूज़र को कोड पास करना पड़ेगा। और जैसे ही जो कोड पास होगा वो कोड इस हमारे क्लास के कोड में स्टोर हो जाएगा, राइट? अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब हमारे पास कोड है, जो कि टोकनाइजर के पास हमारे कोड है, लेकिन इस जो टोकनाइजर है इसमें कुछ टाइप्स होने चाहिए। अब टाइप्स, ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे कि इन सबको हम सेपरेट करेंगे। देखो ये इंट ए इक्वल्स 12, ये सब एक ही स्ट्रिंग है, राइट? ये एक ही फॉर्म है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ये इसे मैं सेपरेट कर पाऊँ, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 12। अगर इनको सेपरेट करूँगा तभी मैं इनको कुछ मीनिंग दे पाऊँगा, राइट? क्योंकि अगर मीनिंग दूंगा तो डायरेक्टली मीनिंग दूंगा तो एंटायर चीज़ को मीनिंग लग जाए, उसका जो भी चीज़ है वो एंटायर थिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। तो उन सबको सेपरेट करने के लिए मुझे कोड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नया कोड लिख दूंगा, पब्लिक वाइड जनरेट टोकन। ओके, और यहाँ पे
जनरेट टोकन क्या करेगा कि हर एक टोकन क्रिएट करेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, टोकन्स को स्टोर करने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, एरे लिस्ट क्रिएट करूँगा। अब एरे लिस्ट में क्या स्टोर होगा, एक स्ट्रिंग स्टोर होगी, ठीक है, और इसका नाम दूंगा लिस्ट इक्वल्स टू न्यू array list. Okay, now I have array list. Now next thing which I want each and every character as a I want each and every character separate. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कैरेक्टर्स ch लिस्ट, इसमें क्या करूँगा कि जो भी हमारा कोड है दिस डॉट कोड, उसको मैं क्या करूँगा, एक एरे लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, सॉरी डॉट टू कैरेक्टर, उसको मैंने क्या एक कैरेक्टर की एरे में फॉर्म कर दिया, ठीक है, मेरे पास एक अरे आ गया। अब इससे मुझे क्या होगा, ईच एंड एवरी कैरेक्टर का मुझे एक्सेस मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारा इंट है वो एक साथ आ जाए, ये एक सेपरेट आ जाए, इक्वल टू सेपरेट आ जाए, 12 सेपरेट आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे नंबर पे। मैं क्या चाहता हूँ कि सॉरी नंबर पे नहीं, हम क्या करेंगे, एक वर्ड पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा बुलियन इज कैरेक्टर नाम दूंगा, इस कैरेक्टर नाम दे दिया, उसमें मैं कैरेक्टर पास करूंगा सी, ओके। एंड यहाँ पे मैं चेक क्या करूंगा कि एक इंट ए इक्वल्स टू वेयर इट विल हैव ए, int z equals to it will have b. So what is this I am doing here, I'm just checking the ASCII value for it, not z b, not it's z. So इससे मुझे क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे मैंने कंपेयर कर दिया, अगर इससे मैंने रिटर्न करते हुए क्या कर दिया, ओके हाँ, तो int c इक्वल int डॉट सी int ch इक्वल्स टू कैरेक्टर c, ओके। एंड रिटर्न करते वक्त मैं चेक करूँगा अगर वो ए से ज़्यादा या फिर इट शुड इन बिटवीन द ए टू जेड, फॉर दैट मैं एक कंडीशन लिख दूंगा, तो सी एच एंड जेड इट शुड लेस देन इक्वल्स टू जेड। सो व्हाट इट विल डू, इट विल चेक दैट इट्स दैट कैरेक्टर ए से जेड के बीच में है क्या। इसका मतलब क्या, अगर बी सी डी ए जेड ये कौन सा भी कैरेक्टर होगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगा दूँगा, इंट आई इक्वल्स 0, आई इज लेस दैन सी एच लिस्ट डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ओके। नाउ व्हाट आई डू, आई चेक इफ अगर इफ यहाँ पे क्या बेसिकली क्या करूँगा, एक कैरेक्टर हर एक पर पिक करूँगा, अगर कैरेक्टर लिस्ट में सा आई एलिमेंट में जो इसको आई प्लस प्लस यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक है, हम आगे जाके आई प्लस प्लस करेंगे। अगर वो कैरेक्टर यहाँ पे ले लिया, अगर वो कैरेक्टर दिस डॉट कैरेक्टर होगा, ओके, जो भी कैरेक्टर मिला वो कैरेक्टर होगा, तो मुझे क्या करना होगा कि उसको एक एंटायर इसके आगे जो भी कैरेक्टर्स आएंगे उनको एक साथ बंडल करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये मुझे आई मिल गया, आई क्या है, कैरेक्टर है, तो इसका मतलब क्या, मुझे इसके आगे जो जितने भी कैरेक्टर आएंगे, मतलब ए आई एन टी, इसके बाद स्पेस है, तो स्पेस तो कैरेक्टर नहीं है हमारे, वो तो हमारे लिए कैरेक्टर नहीं है, तो मुझे इस चीज़ को एक साथ जोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करूँगा। स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट होता है इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करो, ठीक है। स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो एस टी बी इक्वल्स टू, अरे डब्ल्यू दब जा, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर बना दिया। अब मुझे कब तक जाना है, जब तक कि आई की वैल्यू कैरेक्टर लिस्ट से कम है, उसके लेंथ से कम है, और दूसरी चीज़ कि वो कैरेक्टर होना चाहिए। सो दिस डॉट इज कैरेक्टर वेयर सी एच लिस्ट ऑफ आई, वो एक क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। अगर वो सेमी कॉलन या फिर स्पेस होगा तो उसमें उसे मुझे स्किप कर देना है, ओके, ठीक है। फिर क्या, अगर वो होगा तो क्या करेंगे, एस टी बी डॉट अपेंड और सी एच लिस्ट के उस कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे सीधा। अब वो तो हमें मिल गया, पूरा एंटायर थिंग मिल गई, तो उसके बाद क्या करना है कि मुझे उसके बाद इस लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। इसलिए क्या करूँगा,
list dot add और stb डॉट टू स्ट्रिंग। अब अभी अभी देखते हैं, अभी तक इसको मतलब डिस्प्ले करके देखते हैं, ठीक है। एस आउट इस लिस्ट को हम डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट टेक इंट ए और दिस विल इग्नोर दिस एंड देन अगेन इट विल टेक इंट बी एंड अगेन इट विल स्किप दिस बिकॉज हमने उसके लिए चेक नहीं किया। No, it will not skip. Actually, it will be in infinite loop. Okay. Yes. By default यहाँ पे i plus plus लगाता हूँ अभी के लिए. Okay. Now let's see. देखा? No. It's actually throwing some kind of error जो कि मुझे मिल नहीं रहा. ठीक है. I think it will be index out of bound. Yes. I think it will be index out of bound. ठीक है. So e dot get message. Let's see. No, we are not getting any kind of error. How it's possible? Let's check our code. We are converting into character array, then each character this dot okay I plus plus हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद लिस्ट में ऐड होगा। ओके फाइन 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 फाइन, बस यहाँ पे मैं ओके ओके गॉट इट व्हाट व्हाई वी आर नॉट गेटिंग दैट, बिकॉज हमने इसे मेन फंक्शन में लाया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो टोकनाइजर जो कि हमारे माई टोकन्स में होगा, टी के इक्वल्स टू न्यू टोकनाइजर, या जिसमें कि मैंने क्या कर दिया, उस कोड को पास कर दिया। देन व्हाट आई डू, टी के डॉट जनरेट टोकन्स, नाउ इट शुड रन दैट कोड। सी व्हाट वी गॉट ओ हो, ये तो गड़बड़ हो गया ब्रो। ओके इट्स कैरेक्टर, इफ इट्स कैरेक्टर ओके new string builder. Okay, let's debug this code. Let's debug the code. I'll debug this code. I'll go in main file. Okay. So I have why it is ignoring this? Z97 and C equals to 116. So A should greater, no, actually यहाँ पे मैंने गलत दे दिया, that's why CH should greater than equals to A and CH should less than equals to Z. This condition should be like this. Now what we got, int A int B, this is what we got. Okay. now next thing we are going to do is that now we need to handle this equals to and 12. Okay, so what I'll do, I'll here, so I'll go here else if, now we have to check that it's a number or not. So again I'll create one support function, boolean is number and character C, and we are going to do the same, int A equals to 0, int B equals to 9 and int CH equals to character C, and it will return that if a CH is greater than or equals to A or and CH should less than equals to not 0 to Z. So this is what it will do. So what it will do, if number is in between 0 to 9 it will return true, or if it's not number it will return false. Okay, so what I'll do, this dot is number, if it's number what we'll do, we'll come inside it and again we will create one string builder, stb equals string new string builder, and then we will again create a same code while I should less than ch list dot length and this dot is number where ch list of I. Okay,
and stb dot append what we will going to append ch list of I plus plus. So what it will do, it will just concatenate. What it will do, it will just concatenate this number. Okay, and after concatenating we just need to add list dot add it inside stb dot toString. Okay, got it. Now so the now we have output. Before that we have, before this code we have output like this. Now it will now it will also include that numbers as well. We'll see int a 12, int b 13, right? So now next, what is the next problem we are facing? It is not supporting this equals to, and it is not taking that semicolon, right? So for that, this is how we are going to handle it. So what I'll do, I'll create one, and another if else if, and I'll check if it's equal to operator. Then what you should do, list that just list dot add equal, else if c equal to semicolon, just list dot add semicolon. We are done. And if any other token appears, it means it's invalid. Then you should throw new runtime exception, where exception will be invalid token, not this token is not supported. This is what we will go, and we will mention about the token where C, this token is not supported. So now if I'll just run this code, we should get, yeah, oh space, oh, got the problem. Now what is why it is showing us, it is actually indicating the /n next line or spaces. Okay, so how we are going to handle that thing? So this is, we can again create one helper function where is capable, and character C, and what we'll do, return character dot is white space. Is white space. If it's white space or /n something, it will just keep it. Okay, well, else if, and I'll just each this dot is skippable, then it will just increment the operator. Now we'll not get any kind of error. Yeah, what we have int a equals to 2, int b equals to 3. Yeah, but why it's not giving us semicolon? Oh, that's stuff we should look at. Okay, again we know how to solve that error. If you're not getting something, just debug it. I'll just do it until we get a semicolon. Now we are at a variable name. This is the equal to operator. It's adding that equal to operator, and now next thing is space. Now it will just skip it. It is skipping it. Now next we have next one is also space, so it will just skip it. Next one we have, oh, okay, what was wrong? Oh, got it. After this we should also increment it. Yeah, got it. This was the error. This is what we do. Still what's wrong? We have I, then we have A,
then we have equal to, oh, this was a problem. Yeah, yep. Now we are good to go. It's all is happening just because this single I plus plus. Okay, so now we have int a equals to 12 semicolon, int b equals to 13 semicolon. But what is, but still we have this, the still computer will not able to understand what is the meaning of that each and everything. So for that we need to define the token types. For that I could create token type dot java, and I'll create one enum. So we will have like now let me tell you, this is this is integer type, this is a variable declaration, right? This is variable declaration, this is its identifier, uh, it's equal to and it's a number, right? And this is end of statement, and this is again, this is a integer, this is identify, it's equal to 30. So this is how we have to differentiate it. For that what I'll do, I'll create one identifier, next identifier, next I should have equal to operator, then I'll have end of statement, then I'll have identifier int, I should have int, okay, and end of file. This is our end of file, means we are done with each and every code. Then here it should, it is end of file, right? Now we have to create one token for that. So for that we also need one token. For that I'll create token dot java file. So what a token should have, a token should have its type with token type tk, and also it should have value of the token. Okay, so when user will create a token, he needs to pass the token type tk tt and token value. Now as he will pass the token, I'll store it in here, and this dot value equals to token value. Okay, also the user should have access that he should have access that which kind of token it is or what is the value of this token. So for that we'll create two functions, public, where token type get type, and it will return this dot tk, and also another public get value, return this dot value. Okay, now we are good to go to create a token. So instead of doing this, what I'll do, I'll just create this token list as token, and here what we'll do, we'll just remove each and every line. So this all line where we are adding it. Okay, it was just for our visualization that how it's work. So now here type, it's actually it might be identifier, or it might be okay, for that, for each and everything right now we will just give it as a its identifier. Okay, so we'll just take if not if what I'll do, just I'll create one token tk equals to new token, where I should pass the token type. I'll just give token type its identifier, and another thing is that the value of the token, so stb dot toString. So I just added one token, create one token, and I just want to add it in my list. So list dot add token. Now next thing that I should have is that now I also want to store the number. Yeah, I just need to define the number. Okay, it might be a number, right? Okay, so here I will create another token tk equals to new
token, and here token type dot number, and stb dot toString. I'll just store that value of the token, and again I'll add it inside the my list. Now it's equal to operator, right? So same thing, what I'll do, hippity hoppity, this code is now a property. This is what I'll do. Instead of this, what I'll do, I'll just add equals to, and here equals, and same thing, copy paste, same thing I'll do here, copy paste, and okay, here this semicolon, and it means it's the end of the statement, right? Now after it, okay, after we are done with code, so here we will get that all the tokens. Okay, now after the completion of this, here whatever will happen, each and every code will, each and every token will get generated. So I should have the token which will represent this is the end of our code. So for that, what I'll do, I'll just create list dot add new token. The token type will be end of file, and it will be nothing. Okay, it's gonna be nothing. So this is how we are today, we have created this is the code which will create our tokens. Okay, so okay, let's try to print each and every token. Okay, actually it is doing this. Actually we are getting some kind of random values. Actually it's not random values, this is the instance of each and every class that we have created here. See, we create new token, so it is instance. So this is the path of each and every instance. Okay, so for that, what I'll just create one function. The role purpose of the function is to just to display the tokens. Okay, public void and display tokens. It will accept array list of type token list, and it what will do, it will just take each and every token and display it. So token tk from list s out tk dot get type plus tk dot get value. Get value, yes. So here what I'll do, instead of this is doing this, I'll just call this dot display token. I'll pass that list, and we are good to go. Now you can see, now we just created each and every we have created the tokens. See, what is meaning of int? It's meaning it's identifier, but it's identifier, equals to is equal, number 12 eos identifier. But you know what, it's problem, because we have one problem, that this is not an identifier, this is not a variable, it's a keyword. So we should do something that it should be able to differentiate between our identifier and our integer, right? For that, what I'll do, I'll create one hash map where it will have string, and it will store token type. Oh yeah, and map equals to new hash map. Okay, now this is gonna be reserved, these are the reserved keywords, right? So for that, I'll create one function reserved tokens, and here I will reserve each and every token. So this dot map dot put, and for if that will be integer, then it basically means that it's token type int. This is how I reserved it. And to reserve this token, what I'll do, this dot I'll call here reserve token. So whenever this tokens instance will get created, in that time only we will just reserve each and every token. Now we'll come to this part where we are just trying to making everything identify. So I'll check if, okay, I'll string str equals to stb dot toString. So if
which I'll check if this dot map dot get. So it basically means that if it is a reserved keyword, oh no, not get, contains key. If it's basically means if it's a reserved keyword, then what it should do, it should create a token like token type. Same thing we will do. Equal to this dot map dot get, and we will store that type here. If it's, yeah, and it will add it. Else if we don't know that token, it's basically means it's identifier. So list dot add tk. Yeah, we are done. Now let's see. Oh, unchecked conversion, new hash map. Okay, fine. Yep. Yeah, so what we have what is meaning of int, it means integer. What is meaning of a, it's identify, equal, it is the equal to sign means equal, 12 it's a number, semicolon means end of statement. So this is how today we created the tokens. So also we are done with our two parts. We read all the entire file, and we have converted that file into tokens. Now our next job will be to create our AST tree and evaluator. So this is the things which we will cover in our next video. Okay, then till then, bye bye, see you and have a nice day.